So in this video, we'll be doing GIT. So GIT pharmacology, there has been a lot of questions being asked from this topic. So let us do this accordingly. Okay, so let's see. In the GIT, the first question they have mentioned is 409 number का question है. Which of the following is the preferred treatment vomiting in a pregnant patient? Okay. So for the vomiting, like there are options like dromeperidone, metoclopramide, है ना, high fluid intake, small meal to prevent nausea and vomiting. ठीक है. अब ये सब क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है. दिस कैन नॉट बी ट्रीटमेंट. ये जो नीचे का दो है, ये never can be treatment because high fluid intake never give high fluid during active vomiting. During the active vomiting, never high fluid intake should be never taken. ठीक है. Next, metoclopramide, it is widely used generally globally in pregnancy. For the whole world, like globally, we use generally metoclopramide for pregnancy. But domeperidone, they are asking which of the following is preferred treatment of vomiting in a pregnant patient. So here the option domeperidone is here, which can be a better option here because it is used in India. You have restricted it in USA because of lack of enough data supporting its advantages. So this can be a question here, or you can go with metoclopramide also. ठीक है. But generally अगर इंडिया में generally if this question is being asked, so generally we can go with domeperidone. Let's see. D2 receptor blockers, so metoclopramide and domeperidone. ठीक है. Metoclopramide and domeperidone. This metoclopramide generally crosses blood brain barrier. ठीक है. Blood brain barrier can cause dystonia also. The next is domeperidone. It does not cross blood brain barrier, do not cause dystonia, drug of choice for levodopa induced vomiting. So both are prokinetic also, so used in GERD also. So let's see. In the pregnancy, generally this domeperidone has slightly better effects because it does not crosses blood brain barrier and it does not causes dystonia. And if in pregnancy, if a drug causes dystonia, that will not be beneficial for the mother as well as the child also. So metoclopramide, generally in this case we do not use metoclopramide, and generally domeperidone will be a better choice here. ठीक है. So let's move with the next drug. The next question is which of the following could cause acute failure of the liver? Acute failure of liver means hepatotoxic drug they are generally asking, that is amanita phalloids toxicity, morphine poisoning, belladonna poisoning, and organophosphate poisoning. Okay, so this morphine, belladonna, and organophosphate poisoning, they will not generally cause the acute failure of the liver. Rather, this amanita phalloid toxicity can cause generally the acute failure of the liver, that is mushroom poisoning. This is amanita phalloids. Generally you must have written this read this in while in your UG days. Amanita phalloids, it was called nothing as death cup करके हम मशरूम में पढ़ते थे, है ना, death cup, that is amanita phalloids. ठीक है. amanita phalloids. So if we see morphine poisoning, what will be the characteristics of the morphine poisoning? There will be pinpoint pupil, constipation will be there, hypotension, nausea, vomiting, drowsiness, and even coma can be there due to generally मॉर्फिन पॉइजनिंग. ठीक है. ट्रीटमेंट इसमें क्या कर सकते हैं, मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट विल बी नैलोक्सोन. ठीक है. नैलोक्सोन एंड नैल्ट्रेक्सोन कैन बी यूज फॉर मेंटेनेंस. ठीक है. सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट. The next is belladonna poisoning. So let us see what is belladonna poisoning. Belladonna is nothing but atropine poisoning. ठीक है. belladonna और datura, that is nothing atropine poisoning. इसमें जनरली क्या होगा, माइडरियासिस, टैकीकार्डिया, हाइपरथर्मिया, साइक्लोप्लेजिया will be there, constipation will be there, and urinary retention will be there. Treatment will be physostigmine, or antidote of the choice will be generally physostigmine. Next if we see organophosphate, OP poisoning. OP poisoning यानी कि if we talk about OP poisoning, this is nothing but a pinpoint pupil plus hypersecretion. If the patient comes in your generally your emergency department, you see just pinpoint pupil, और अगर hypersecretion, hypersalivation, sweating ये सब अगर हो रहा है, then most of the time the diagnosis is almost 100% sure that this is nothing but the OP poisoning case. और अगर उसमें अगर generally if he is a farmer है ना, then the diagnosis is almost sure. This is generally nothing but carbamate poisoning, है ना, generally carbamate poisoning. Next, there will be pinpoint pupil. I told you pinpoint pupil, hypothermia will be there, bradycardia will be there, hypotension, and generally ataxia will be there, and there will be salivation and diarrhea. Salivation and diarrhea, the treatment will be generally atropine. Treatment will be atropine. Next, see. In which of the following agent will be used for rapid emptying? Oh, I said like hypotension, it is hypertension, I think. Which of the following agent will be used for rapid emptying of bowel in emergency? Bowel in emergency कौन सा होगा? Which of the following agent will be used for rapid emptying in of bowel in emergency? अब देखो bowel generally हम emergency में कब empty करते हैं? When we have to do certain like टेस्ट जब करना होता है हमको, है ना, वी हैव टू डू सर्टेन कॉलोनोस्कोपी, अगर इधर उधर ये सब करना है जनरली, देन वी वांट द रैपिड इम्पटिंग ऑफ द बाउल. फॉर दैट केसेस जनरली यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया हुआ है सेना, है ना,
magnesium citrate, bisacodyl and lactulose. So before doing about the answer, इसमें आंसर तो मैग्नीशियम साइट्रेट हो जाएगा बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट एक्टिंग ऑस्मोटिक लैक्जेटिव्स. सो लेट अस टॉक अबाउट जनरली सम लैक्जेटिव्स. ठीक है, अब लैक्जेटिव्स में सर्टेन ड्रग्स विल बी देयर व्हिच विल इंक्रीज जनरली इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, लैक्जेटिव्स और परगेटिव्स जनरली there will be many mechanism of action, among which the one action is it will increase intestinal contraction. To increase the intestinal contraction, the stool will pass easily. So here see the drugs which will work by this mechanism is nothing but bisacodyl and senna cascara. ठीक है, senna cascara. So let's see. It is used for the short term, maximum 10 days use, effect is 6 to 8 hours after. So generally अभी अगर लेंगे तो 6 to 8 hour के बाद generally the effect will be seen. So that is that's why it will be taken at night and in the morning. पेट सफा रोग दफा विल बी डन. ठीक है, पेट सफा रोग दफा. सो जनरली दिस इज बिसाकोडिल एंड सेना कैस्कारा that will generally increase the intestinal contraction. If I talk about the second drug, that is 5-HTA antagonist. ठीक है, 5-HT4 antagonist agonists. So this 5-HT4 agonist में generally mosapride, prucalopride will be generally. The next group of drug will be generally these both bisacodyl, senna cascara, 5-HT4 agonist. They all will increase the intestinal contraction and thereby the stool will be ejected. Next, स्कूल इंक्रीजेज द बल्क ऑफ द स्टूल. ठीक है, अगर बल्क ऑफ द स्टूल को इंक्रीज कर दिया जाए देन अगेन दैट कैन बी गुड. सो दैट इज नथिंग बट वन ड्रग विल बी प्रोबायोटिक्स एंड द सेकंड विल बी प्रीबायोटिक्स. सो प्रोबायोटिक ड्रग विल बी बेनिफिशियल माइक्रोब्स विल बी गिवन लाइक लैक्टोबैसिलस, saccharomyces and b cloci will be given. If I talk about the prebiotics, there will be dietary fibers. The increased number of dietary fibers can form the bulk of the stool. So generally that is methyl cellulose, psyllium husk and bran can be used in the food. That will increase generally the dietary fibers and that will also help in generally the increasing of the stool bulk. दूसरा हम कर सकते हैं increase stool softening. ठीक है, increase stool softening. So that is least effective method and generally docusate sodium is used because it is a surfactant and docusate calcium can be used. This is very least effective. आप नाम भी नहीं सुनोगे इसका. दूसरा क्या कर सकते हैं हम, we can increase the water in the intestine. For that we can use osmotic laxatives. ठीक है, osmotic laxatives, that is mannitol, second line for constipation. Mannitol is second line for constipation and first line it is for mannitol is for what? Mannitol is osmotic diuretic and generally it can be used for in the case of cerebral edema and contraindicated in the case of acute hemorrhage. ठीक है, so used for hepatic encephalopathy also. Chloride secretory agents like lubiprostone and generally linaclotide can be used. All of these will generally increase the water in the intestine. Polyethylene glycol, that is drug of choice for IBS plus constipation. ठीक है, irritable bowel syndrome plus constipation के लिए the drug of choice will be PEG, that is polyethylene glycol. And tinapanor generally sodium hydrogen exchanger को generally it will stop and that will lead to increase water in the intestine and that will lead to your desired effect. So these are generally all the laxatives that we will use. Next, the patient consumed an antiemetic metoclopramide. Which of the following statement is incorrect about this drug? Okay, it can cause hyperprolactinemia, can cause extrapyramidal symptoms like dystonia, crosses blood-brain barrier, and safer than domperidone in children. Let's see, मैंने ऊपर ही बताया था D2 रिसेप्टर ब्लॉकर में दो ड्रग्स मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमेपेरिडोन. सो जनरली metoclopramide generally it crosses the blood brain barrier, can cause dystonia, can cause hyperprolactinemia. डोमेपेरिडोन की अगर मैं बात करूँ, it does not crosses BBB, it does not cause dystonia or drug of choice for levodopa induced vomiting. Both are prokinetic also, that's why they are used in GERD, gastroesophageal reflux disease. So generally incorrect about this drug is safer than domperidone in children. This is incorrect statement. It can cause hyperprolactinemia, can cause EPS like dystonia and generally crosses blood brain barrier. A tourist has visited an Indian village and developed mild diarrhea, which later on found to be caused by the E. coli. Which of the following is the most suitable drug for? देखो, this is the clear cut case of generally travelers diarrhea. ठीक है, एक टूरिस्ट आया जो इंडियन विलेज में घूमा, उसने कुछ खाया, वहां से उसको माइल्ड डायरिया हो गया, which later on found to be caused by E. coli. ठीक है, which of the following is the most suitable drug? So the most suitable drug for drug of choice for travelers diarrhea will be nothing but loperamide. So this is the case of travelers diarrhea and loperamide is generally the drug of choice. Let's see all the antidiarrheal agents at one place. So for secretory diarrhea, non-secretory diarrhea and biliary diarrhea. So three type of diarrhea will be there. For secretory diarrhea, the drug of choice will be octreotide, so somatostatin analog. Next, the non-secretory, that is IBS के case में generally है ना, drug of choice will be loperamide, that is an opioid, and 5-HT3 antagonist, that is allocetrone. In female, side effect is ischemic colitis. ठीक है. Next, generally bile acid binding resins can be used. Cholesevelam, cholestyramine and cholestyramine can also be used. These are the antidiarrheal agents. अगर मैं rifaximin की बात करूँ तो this is irritable bowel syndrome में यूज किया जाता है.
द ऑक्ट्रियोटाइड मैंने आपको अभी बता दिया सेक्रेटरी डायरिया के लिए, एंड जनरली जिंक विल बी यूज फॉर एड ऑन सप्लीमेंट यूज इन सेक्रेटरी इन्फेक्टिव डायरिया विद जनरली अदर ड्रग्स, एड ऑन सप्लीमेंट, ठीक है। A patient is taking platinum-based chemotherapy for treatment of ovarian cancer. Which of the following drugs should be used to prevent the nausea and vomiting in this patient? Okay, so antiemetic drugs generally early CINB में early case में early chemotherapy induced nausea and vomiting में generally drug of choice will be 5-HT3 antagonist, that is nothing but ondansetron, granisetron and palinosetron. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिलेड कीमोथेरापी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग के केस में सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट लाइक एप्रिपिटेंट एंड ट्रोलापिटेंट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस, बोथ ऑफ दिस हैज बीन अ क्वेश्चंस, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रिवेंट द नोजिया एंड वोमिटिंग, प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरापी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर। सो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि अर्ली है या फिर लेट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग इन दिस पेशेंट्स, बेस्ट विल बी जनरली palinosetron group of the drug, that is 5-HT3 antagonist. Next, laxative used in hepatic encephalopathy, अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था, that is nothing but lactulose. So generally lactulose is used in constipation caused by opioids, जनरली आइडियोपैथिक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में भी इसको यूज करते हैं, ऑल्सो यूज फॉर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी बिकॉज इट ट्रैप्स एमोनिया दैट इज नॉट डिटॉक्सिफाइड बाय लिवर एंड कन्वर्ट्स इट टू पोलर अमोनियम आयंस एंड एक्सक्रीट वाया स्टूल्स, दैट्स व्हाई इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस जनरली इन केस ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। आगे देखो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर जनरली NSAID इंड्यूस्ड। सो जनरली इसमें देखो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर विल आल्सो always be PPI, proton pump inhibitors. Most specific drug for NSAID induced peptic ulcer is misoprostol. So you have to remember two things यहाँ पे देखो, डायरेक्ट अगर पूछ रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NSAID induced peptic ulcer, so that will be PPI. Most specific drug for NSAID induced peptic ulcer, that will be generally misoprostol. So generally देखो PPI drug of choice for PUD due to any reason, ये याद रखना है हमको, drug of choice for peptic ulcer disease due to any disease, that is any reason, that is proton pump inhibitor. Drug of choice for GERD also is PPI, and then drug of choice for Zollinger-Ellison syndrome is also PPI. PPI कहाँ drug of choice है? Now you got proton pump inhibitors like omeprazole. ये antacids like MgO2 generally this is the fastest relieval of पेन को रिलीव करने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट एजेंट यूज किया जा सकता है इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, दैट इज नथिंग बट एंटासिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया आर करेक्ट एक्सेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया के लिए सारे करेक्ट हैं एक्सेप्ट कौन से, देखो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स दिस इज जनरली इंडिकेटेड इन नॉन इन्फेक्टिव सेक्रेटरी डायरिया, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्फेक्टिव डायरिया। सो देखो दिस इज नॉट द चॉइस फॉर इन्फेक्टिव डायरिया, ठीक है, जनरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेक्टिव डायरिया एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, ठीक है। इन्फेक्टिव नॉन इन्फेक्टिव सेक्रेटरी डायरिया में जनरली एंटी मोटिलिटी ड्रग्स आर जनरली प्रीफर्ड इन नॉन इन्फेक्टिव सेक्रेटरी डायरिया, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी, ये देखो लोपेरामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट आर ओपियोइड्स यूज्ड एज द एंटी मोटिलिटी, ऑफ कोर्स दिस इज राइट, है ना। डाइफेनॉक्सिलेट ओवरडोज कैन कॉज, है ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये भी राइट है। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया आर करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। ऑपियोइड्स डिक्रीज द पेरिस्टाल्सिस एंड कैन बी यूज्ड इन डायरिया, ठीक है ये। सो दिस इज जनरली दिस आर जनरली द 470 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। सो दिस इज जनरली आवर आंसर। सो 470 नंबर का भी वी हैव डन, एंड आफ्टर डूइंग दिस मच वी आर डन विथ GIT। GIT से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, दे विल बी आस्किंग वन क्वेश्चन दैट इज लैक्जेटिव वाला पूछेगा आपसे, है ना, एक लैक्जेटिव का क्वेश्चन हो जाएगा, एक GERD का जनरली GERD का जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज का जनरली दे कैन आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, एंड समटाइम्स दे विल मेनली फ्रेम दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द मेडिसिन लाइक वो जो ट्रिपल थेरापी हम यूज करते हैं ना, वो यूज ड्यूओडेनल अल्सर वगैरह के लिए वो चीज़ें पूछी जा सकती है, नॉट मोर देन दैट। देखो इसमें तो वो पूछा भी नहीं गया एकदम, ये जनरली फॉर FMG दे विल नॉट आस्क दैट मच, बट जनरली फॉर नीट PG दे कैन आस्क, ठीक है। सो आप एक बार उसको भी देख लेना, एंड देन यू विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, वी हैड डन दिस इन 15 मिनट्स। थैंक यू, विल मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक ना, ठीक है।